Students, welcome to the class of business studies. So, bache, we have already done the features as well as the importance of the business environment, and I hope you all have understood that. And today we are starting up with the next topic, that is the components of economic policy 1991. Components are already given in your book, but I want to give the little brief introduction. What do you mean by the term economic policy? But economic policy 1991 has been formulated by the government on the basis of the economy as a whole. Okay? That has given certain kind of relaxation to the business houses so that they can uplift themselves, they can earn, we can say, better opportunities from the market, okay? As well as they should have the keen knowledge and the understanding of the business environment. Okay, so they have given certain kinds of grant to all the business houses as a whole. So they have characterized as the components of economic policy, means basically they have characterized the business unit into three main categories. Okay, so first component of economic policy is the liberalization, then privatization, and then globalization. Okay, so under the liberalization, we can say liberalization means that is to given certain kind of liberal opportunity. Liberal opportunity means to free something. ठीक है, किसी को किसी तरह की liberty देना. ठीक है, so liberalization in terms of the economic policy means that liberalization means end, किसी चीज का अंत कर देना, end. ठीक है, like end of the license, quota. ठीक है, and they have put certain kind of restrictions on the, we can say, formulation of the business houses also. ठीक है, तो liberalization means economy ने क्या किया, they have given certain kind of liberal authority to all the business houses so that they can grow in the coming up of the near future. ठीक है, like they have given you the points that see, Indian companies got liberalization in the following ways. First is abolition of license except in few. ठीक है बच्चे, जब हम we can say, I was telling you when I was a student, I have read that whenever we are talking about the business houses, ठीक है, previously there were 14 industries कि जब उनको सेटअप करते थे ना, then there is the requirement of the license, and if they are not having the license from the recognized authority, if they have not listed its business under the government authority, तो वो business ban कर देते थे. तो उन्होंने क्या किया, पहले 14 इंडस्ट्री सी, 14 इंडस्ट्री से उन्होंने कर दी 6 इंडस्ट्रीज. ओनली 6 इंडस्ट्रीज दे नीड द लाइसेंस अप्रूवल. 6 के बाद उन्होंने फिर 4 की. 4 के बाद एट नाउ प्रेजेंट दे आर हैविंग ओनली 3 इंडस्ट्रीज. ठीक है, और द बिजनेस हाउसेज विच आर अंडर द लाइसेंस सिस्टम. ठीक है, बाकी सभी बिजनेस हाउसेज को उन्होंने फ्री कर दिया, लिबरल अपॉर्चुनिटी दे दी. ठीक है, दैट यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस एज योर ओन. ठीक है, लाइक न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री है, तो जब न्यूक्लियर पावर की इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है, देन देयर इज द नीड ऑफ द प्रायर लाइसेंस. ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी बिजनेस कोई और यूनिट शुरू करता है तो उसके लिए लाइसेंस इट इज नॉट द मैंडेटरी टर्म. क्लियर. नेक्स्ट इज no restriction on expansion or contraction of the business activities. ठीक है, if the businessman they want to expand their unit, they can easily expand that. If they want to, we can say, contract their unit, they can easily contract that also. Next is reduction of the tax rate and lifting of unnecessary controls over the economy. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने किस वे में लिबरल किया, they have reduced the rate of the taxation. ठीक है, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास दे आर हैविंग ओनली वन ऑल्टरनेटिव टू अर्न फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट इज द टैक्सेशन सिस्टम. ठीक है, तो सो दे हैव गिवन सर्टेन काइंड ऑफ लिबरल अथॉरिटी टू ऑल द बिजनेस हाउसेज कि उन्होंने टैक्स के जौन से रेट थे वो कम कर दिए. नेक्स्ट इज इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. ठीक है, इजी प्रोसीजर मीन्स कि नाउ द बिजनेस हाउसेज दे आर डीलिंग विद द अब्रॉड कंट्रीज ऑल्सो. फॉर दैट देयर इज नो नीड ऑफ द प्रायर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सो दे आर डूइंग द बिजनेस ऑन देयर ओन बिहाफ. नेक्स्ट इज फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो नाउ इफ आई एम ऑपरेटिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आई एम लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, सो देयर इज नो नीड ऑफ द अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट. आई कैन सेट डाउन माई ओन प्राइजेस. ठीक है, तो मैं अपने जौन से प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो खुद ही एस्टैब्लिश अपनी मर्जी से कर सकती हूँ.
ठीक है. So this economic policy is regarded as the liberalization. Next we are having privatization. Privatization means giving greater role to the private sector as compared to the public sector. ठीक है. Now these days also what you people are saying that private companies, they are having more amount of goodwill, they are having more reputation as compared to the public company. ठीक है. And if you consider about the, we can say, salary compensation of the big companies, ठीक है, so they are compensating their employees in a very good manner as compared to the public sector companies. ठीक है. So privatization means that is, it refers to the greater role given to the private sector as compared to the public sector. Clear? Next we are having third component we are having, that is the globalization. Globalization means integration of the entire world. Integration means कहीं पे मर्जी रह के तुम अपने जौन से बिजनेस है उसको ऑपरेट कर सकते हो. दैट इज रिगार्डेड एज द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पॉलिसीज. ठीक है. तो इसके अंडर भी उन्होंने 2 प्रोसीजर हमें दिए हैं. दैट इज इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ठीक है. तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट मीन्स यू पीपल हैव रेड अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्राइटेरिया. ठीक है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. एक्सपोर्टिंग मीन्स, हाँ, सो वी कैन से एक्सपोर्टिंग मीन्स दैट इज, what do you mean by the term export? Export का क्या मतलब होता है? When we people are selling our country's goods and services to the other country, and import means when we people are purchasing the goods and services from the other country. So this is regarded as the integration of all the economies by the means of, we can say, by the means of globalization. ठीक है. So that is regarded as the another component of the economic policy 1991. ठीक है. So these are regarded as the essence. These components are regarded as the essential part of the economic policy. These are regarded as the essential, we can say, terms and conditions of the business houses. That is liberalization, free कर देना कुछ industries को. Privatization, greater role given to the private. Globalization, when we people are talking about the, we can say, our business house having the link with the abroad countries, or the abroad business houses, they are having the link with our country's business. So that is regarded as the globalization, means integration of all the economies. ठीक है. So बच्चे, these are basically 3 components of the economic policy 1991. Next topic we are having, that is impact of changes in economic policy. Means economic policy उन्होंने formulate कर दी, लिबरलाइजेशन भी आ गया, प्राइवेटाइजेशन भी आ गया, एंड द इकोनॉमी दे हैव अलाउड द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. तो इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस हाउसेस पे क्या हुआ? दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. सो फर्स्ट इम्पैक्ट वी आर हैविंग, दैट इज नंबर 1 इज द इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ठीक है. सो वी आर हैविंग increased competition in the market. ठीक है. So now when there is the impact of the changes in the economic policy, now globalization, it also becomes the part of the business environment. ठीक है. तो now it is a very tough for the business houses. They need to study not only the internal environment, they have to study about the external environment also. ठीक है. So now they have to face the competition from the internal market. ठीक है. फ्रॉम द MNCs ऑल्सो. ठीक है. एंड दे हैव टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज. देन ओनली दे कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन, अदरवाइज देयर बिजनेस विल श्योरली शट डाउन. ठीक है. तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशंस, नाउ द बिजनेस हाउसेज दे हैव टू फेस टफ एंड मोर कंपटीशन इन द मार्केट. और सिर्फ वही बिजनेस कंसर्न सर्वाइव कर रही थी. ठीक है. दोज हु आर अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू compete नंबर ऑफ MNCs, दैट इज द मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है. तो पहले जौन सा बिजनेस एनवायरमेंट था, दे आर हैविंग द लिंक. ठीक है. वो क्या स्टडी कर रहे थे? जस्ट ओनली द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. बट नाउ विद द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर इज द एंट्रेंस ऑफ द MNCs. ठीक है. एंड नाउ देयर इज अ नीड टू compete with the MNCs.
ठीक है. And in order to survive, in order to be there in the competition, there is the requirement of the latest technology as well as large number of the resources. Otherwise क्या हो रहा था, जो छोटे मोटे बिजनेस थे वो खुद ब खुद क्या हो रहे थे, close down, they are shutting down. Clear? Next we are having, that is the more demanding customers. More demanding customers means कि with the coming up of the economic policy, with the coming up of the components of the economic policy, now these days the customers are more demanding. The customers are more conscious related to their health. They used to prefer qualitative type of the product. ठीक है. पहले हमारा क्या था, प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट मीन्स इन द इंडस्ट्रीज फर्स्ट दे डू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, देन दे ब्रिंग अप द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू सेल देम. ठीक है. बट नाउ द डिमांड ऑफ द कस्टमर हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम डे बाय डे. ठीक है. तो अब क्या होना शुरू हो गया, नाउ द कंपनी इज द कस्टमर ओरिएंटेड. First, the business houses, they go to the market, study the behavior of the customer, then they come back, launch the product according to the taste and preference of the customer, and then they are launching up their product in the market. ठीक है, just only to satisfy the customer, because now these days the customers are more demanding in nature. ठीक है. So the concept of the business has been changed, that is from producer market, now it has become to the buyer's market. Next, third, we are having rapidly changing technology environment. Rapidly changing in technology environment means before the launching up of the economic policy, the business houses, they have to face the competition just because of the internal environment. ठीक है, because they are operating only in India. But now with the coming up of the MNCs, ठीक है, they have to change their technology on the rapid, on the, we can say, on the faster basis, so that to compete, so that to face up the challenges being faced by the customers. ठीक है. So that is regarded as the rapidly changing technological environment. ठीक है. और ये rapid changes क्यों required थी, because of the coming up of the MNCs. ठीक है, because of the concept of the globalization. ठीक है, because of the concept of the integration of all the economies. Next, we are having necessity for the change. Necessity for the change means now the business enterprises have to modify their way of conduct, their way of doing the work, because this is the need of the hour. ठीक है. अब जैसे है कि नाउ अगर मेरे पास कोई रख दे कि हाँ भी आप ब्लैक एंड वाइट टीवी देख लो, ठीक है, आई कांट एंजॉय दैट. ठीक है, बिकॉज चेंज इज द नीड फॉर द आर, नेसेसिटी फॉर द चेंज मस्ट बी देयर. ठीक है. सो बिफोर द बिजनेस एंटरप्राइजेस कुड स्टेबल पॉलिसीज. ठीक है, बट नाउ दीज डेज दे हैव टू मॉडिफाई, दे हैव टू चेंज देयर एस्पेक्ट, दे हैव टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग एज वेल एज सीइंग द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस. दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द चेंज. जो जितना जल्दी अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन लाता है, ठीक है, चेंजेस लेके आता है, उसका प्रोडक्ट उतना ही मार्केट में एस्टेब्लिश हो रहा है. बिकॉज नाउ दीज डेज जौन सी कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस है वो डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बिकॉज दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. ठीक है, हम टीवी पे जो वेस्टर्न कल्चर का देखते हैं हमारा दिल करता है कि वी शुड हैव टू फॉलो दैट. ठीक है, तो देयर इज द नेसेसिटी फॉर द चेंज. नेक्स्ट वी आर हैविंग fourth, that is the development of the human resources. Development of the human resources means, like if we are talking about before the economic policy, ठीक है, the business houses, they are managing up their business with less skilled persons. But now, due to the tough competition in the market, all the business houses, they want that they should hire trained as well as the experienced personals on each and every workplace, so that they can win up the competition in the market. So development of the human resources, like time by time they are conducting the training sessions also. Why they are conducting training sessions? That is to develop the human resources. This is also the need of the hour. ठीक है, because the entire performance of the business houses, it depends upon the development of the human resources. जितने intelligent persons हमारी organization में काम कर रहे हैं, उतना ही intelligence से हमें result मिलेगा. Next we are having, that is the market orientation. Market orientation means first
before the economic policy they are dealing with the selling concept, but now they are dealing up with the marketing concept. Selling concept means पहले क्या होता था, उनको जोन से भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए उनको हुक और बाय क्रुक मार्केट में जाके बेचने पड़ते थे, बट नाउ दीज डेज इट इज द marketing concept. Marketing concept means first they have to identify the taste and preferences of the customer, and then according to that they have to sell their product in the market. Next we are having loss of budgetary support. Loss of budgetary support means before the economic policy 1991 all the losses of the public sector, ठीक है, were used to made good by the government. गवर्नमेंट हर एक लॉस पब्लिक सेक्टर का खुद उठा लेती थी, ठीक है, मींस लॉस की भरपाई वो गवर्नमेंट कर देती थी, ठीक है, बट नाउ दीज डेज पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दे हैव बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन. नाउ इफ द पब्लिक सेक्टर दे आर कन्फ्रंटेड विद एनी काइंड ऑफ लॉस दे हैव टू डील अप विद दैट लॉस ऑन देयर ओन, ठीक है, बिकॉज नाउ दीज डेज पब्लिक सेक्टर have to compete with the private sector because private sector is running forefront as compared to the public sector. So loss of the budgetary support. आजकल क्या हो रहा है कि everybody know that there is the बोलबाला of private sector as compared to the public sector, ठीक है, so everyone inclined towards the private sector as compared to the public sector, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, they have, we can say now they have given the relaxation. Now they are not providing any kind of support to the public sector if they are indulged with any kind of the losses, okay. So public sector they have to maintain their position on their own, they have to maintain their work on their own, they have to maintain their losses on their own. Last we are having that is export, a matter of survival, ठीक है. सो बिफोर इकोनॉमिक पॉलिसी वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अप द बिजनेस इन्वायरमेंट वी आर नॉट इंडल्जिंग इन द बिजनेस ऑफ द इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, बट नाउ there is a component of the economic policy that you can deal with the globalization, you can deal up with the business at the global level. Global level means there is the far reach of your business activities, ठीक है. So they are saying export, a matter of the survival. If you are exporting your goods and services to the abroad country, naturally they are making you the payment, they are making you the payment in their own currency, ठीक है, which will again uplift the graph of your business activities, ठीक है. सो बिजनेस एक्टिविटीज विल ग्रो, ठीक है, द बिजनेस एक्टिविटी विल बूस्ट देमसेल्फ इफ दे आर सक्सेसफुल इन एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द अब्रॉड कंट्री, इफ दे आर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द गुडविल एंड द रेप्यूटेशन इन फ्रंट ऑफ द अब्रॉड कंट्री. क्योंकि अगर एक हमारे इंडियन प्रोडक्ट की, ठीक है, रेपुटेशन बन जाए अब्रॉड कंट्री के सामने तो नेचुरली अब्रॉड कंट्री दे आर वर्किंग एज अ giving up the booster to the Indian companies, ठीक है, in terms of the profit maximization, in terms of the strong financial base, all that, ठीक है. So this is regarded as the export, a matter of the survival, ठीक है. So these are the components 3 we have done, ठीक है. उसके बाद components जब formulate कर दिए तो उसका impact हमारे business house पे, Indian economy पे, Indian business unit पे क्या पड़ा, ठीक है. So in all these 8 points what you people have to do, how you people have to explain if the question is there in your exam, you have to write down like first point, increase in competition, ठीक है. Then you can write that before the launching up of the economic policy our condition is like this, and after the launching up of the economic policy our condition is like this, ठीक है. So you have to give the relevant, you have to give the difference कि पहले क्या था और अब with the components of the economic policy उसमें क्या बदलाव आया, how we can say how our business unit have been changed, ठीक है. So do these points very attentively. Thank you.